the topic elements of landscape design. There are the 5 basic elements of landscape design. Number 1 is color, number 2 is form, number 3 is line of sight, number 4 is scale or balance, and number 5 is texture. Color. Color theory is often used in landscape design by dividing the color spectrum into the 4 categories. The categories are: number 1 is primary colors, number 2 is secondary color, number 3 is tertiary colors, number 4 is neutral colors. The primary colors are red, yellow, and blue. If we mix primary colors with each other, then we found secondary colors. For example, if we mix primary color yellow with the primary color red, then we found orange color as a secondary color. And if we mix primary color red with primary color blue, then we found secondary color violet. And if we mix primary color blue with the primary color yellow, then we found secondary color as a green. So you all know the secondary colors are green, violet, and orange. And if we mix primary with the secondary, then we found tertiary colors. Primary with the secondary, then we found tertiary color. The mixtures of primary and secondary categories are known as tertiary colors, and neutral colors are white, gray, and silver. These are the neutral colors. The spectrum is shown as a wheel divided into the slice that stand for the color. Using color theory, landscape use this wheel. These are the slices. These total are color spectrum, and the color spectrum is divided into slices. These are the different slices. To choose adjacent color in the spectrum to provide unity, or directly across from each other on the color wheel that provide contrast. अगर हम adjacent color आस पास वाले color यूज करते हैं स्पेक्ट्रम में तो हमें यूनिटी मिलती है, और अगर हम across आमने सामने वाले यूज करते हैं तो हमें कलर व्हील के तो हमें कंट्रास्ट मिलता है. दिस इज द इमेज ऑफ showing a landscape just like a scenery. As I discussed earlier, here is the combinations of colors. A simple way to achieve unity is to match warm color to warm color, red, yellow, and orange. Here is a warm color image, and cool colors are blue, purple, and green. If we divide color wheel into two categories, then we found color wheel in warm colors and hot colors. For example, if we divide color wheel from the mid side, then the right sides are warm color and left sides are cool colors, which provide cool colors provide relaxed movement, and warm colors provide hot warm colors provide hot and attractions. Proper use of color theory can influence the mood felt in the yard. Warm colors tend to excite the viewers. Color like red are the neutral for focal point. Red color attract the focus and have a focal point and attraction. The red color attract everyone's, and the cool colors are more relax the viewer. Cool colors like blue, a logic choice for a meditation garden. Here is the image showing a cool colors. These colors are cool, which provide a relax to image. Beginning gardeners plant their favorite colors with little or no planning. जो garden बिगनिंग गार्डन्स होते हैं, जो अभी गार्डन्स हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम कोई प्लानिंग नहीं लेते, बट फेवरेट कलर्स के फ्लावर्स लगाते हैं.
और जो एडवांस गार्डन होते हैं उनके अंदर हम कलर की थ्योरी को यूज करते हुए प्लांटिंग करते हैं जो हमारे मूड और स्टाइल को क्रिएट करते हैं. Now, second one is foam. What do you understand by foam? Foam is just a outline of an enclosed or a space. That is also known as shape. Form is three dimension, and foam is found both in landscape and in plants or and in hardscapes. The form structures found in plant bed, gardens, ornaments, and determines the overall form themes of garden. Form two types, formal and informal. Formals are geometrical forms, included circles, square, polygons, and informal naturalistic form includes meandering line, organic edge, and fragment edge. There are the some forms of trees which you are shown, which I have already shown in image. These are the forms of tree. Number one is columnar. The structure of this column is similar like a column. Then the name of this tree is columnar. Oval shape. This image shows oval. And vase shape. Vase shape is an example of neem tree. And webbing shape, webbing is an example of burger tree. Pyramidal is an example of Christmas tree. Round, round is example of people tree. People. Now there are the six types of form: columnar, oval, vase, webbing, pyramidal, and round. Number one is horizontal and spreading. Emphasize the lateral extent and a birth of space. Round forms allows for ease access of eye movement and create pleasant undulation. Vast shape, comfortable people space and beneath the canopy. Provide a space for a people to rest underneath the vast shape. Webbing leads eye to the ground. अगर हम वेपिंग को देखते हैं, वेपिंग ट्री को देखते हैं, तो हमारी आईज नीचे की तरफ जाती हैं. क्यों? क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ लटकती होती हैं. एंड पिरामिडिकल, जो पिरामिड की शेप में ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारी आई लीड्स डायरेक्ट टू द अपवर्ड डायरेक्शन. पिरामिडिकल फॉर्म डायरेक्ट द आईज अपवर्ड, राइट? Now the texture. Texture is of three types: coarse texture, fine texture, and medium texture. How we judge the texture? With the help of feel or with the help of touch, we can recognize that the texture is medium, fine, or coarse texture. Texture is fine or coarse, heavy or light, thin or dense, and light or shade. That defines the relationship between the foliage and the size and the mass of plants. If we plant a tree like a mixed plant or with the large leaves, if the plant have large leaves, then the texture is coarse, and if the plant has small leaves, then the texture is fine. And to avoid the monotony in a plant bed, to add a visual interest, if we placed a plant with a great distance, the smoother texture will be appear to. Now the next one is line of sight. The line of sight is a viewer eye movement. Line of sight means कि जहाँ पे हमारी eye जिस भी direction में move करे, that is the line of sight. Now here is a line of sight. That is a curved line of sight which is made by a brick path, right? And the brick path divided by a two gardens, or flow being influenced by the arrangement of plants or their borders. Eye movement is unconsciously affected by the way plant, जैसे हम प्लांट्स को अरेंज करेंगे, जैसे हम प्लांट्स को लगाएंगे, हमारी आई उसी मूवमेंट में घूमेगी. चाहे हमने प्लांट्स को हॉरिजॉन्टल वे में लगाया,
चाहे हमने प्लांट्स को वर्टिकल प्लांट्स में लगाया, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हो रहा है वर्टिकल हैंगिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रीपर्स. Line. Lines refer to the structure within a landscape. There are the number of lines: straight line, curved line, meandering lines, vertical lines and horizontal bed lines. First image में already ये define हो रहा है कि ये straight एक मरीज ट्री हमने यूज कर रखे हैं दोनों साइड में और they develop a straight line and also monotony, continuous repetition of a single element after a fixed interval, and also playing a balance. If we cut these from center axis, then there is a balance on both the sides because same element is used on both the sides. Now curve line, second image, curve line, the line which is made like this, that is curve line. Meandering lines which is made by a stone boulders, meandering lines, these are the meandering lines. Vertical lines, vertical gardener, वॉल को पूरा उन्होंने कवर कर रखा है, that is known as vertical lines or hanging plants. Horizontal bed lines, these are the horizontal bed lines, horizontal line and horizontal lines, right? Hedges or row plants direct attention to a focal point or specific area. Meandering lines or curved lines slow and create a natural undisturbed feeling. जो मेंडरिंग लाइंस होती हैं और जो कर्व लाइंस होती हैं वो हमें क्रिएट करती है नेचुरल लाइंस और अनडिस्टर्ब्ड फीलिंग फील करवाती हैं, दैट इज नोन एज कर्व लाइंस. नाउ स्केल एंड बैलेंस. The visual relationship of the landscape component relative to the size. जो विजुअल लैंडस्केप का रिलेशन होता है वो कंपोनेंट का उनके साइज के साथ. अगर हम इक्वल साइज यूज करते हैं बोथ द साइड्स, देन लैंडस्केप गिव अ बैलेंस. बैलेंस इज ऑफ टू टाइप, symmetrical balance or asymmetrical balance. The repeating of the element on both the sides with an imaginary center line is known as symmetrical balance. Asymmetrical balance, equal size or equal weight on the both side of the axis without repeating of a same element is known as asymmetrical element. Symmetrical element में क्या होता है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों साइड में सेम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एक्सिस लाइन, दैट इज नॉन एज सिमेट्रिकल. और असिमेट्रिकल क्या क्या होता है, चाहे भले ही साइज इक्वल हो, भले ही वेट इक्वल हो ऑन द बोथ साइड्स, बट जो एलिमेंट यूज करा है वो सेम ना हो, दैट इज नॉन एज असिमेट्रिकल बैलेंस. नाउ डिजाइन के अंदर एक प्रॉपर प्रपोर्शन का वर्ड आता है, प्रपोर्शन एंड स्केल. ये इनका एक रिलेशनशिप है अमंग बिटवीन ईच कंपोनेंट द डिजाइन एज अ होल. जितने भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में रिलेशन, प्लीजिंग रिलेशनशिप होना डिजाइन एज अ होल. अब ये हमारे पास जो स्केल है वो तीन तरह का स्केल होता है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल. जो फर्स्ट इमेज है ये इमेज हमें शो कर रही है लार्ज स्केल. ये आपको एक छोटी सी हट दिख रही है, हट के साइड में इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, दैट इज लार्ज स्केल. मीडियम स्केल, ये हट और ये मीडियम ट्रीज, एंड स्मॉल स्केल हर्ट के इक्वल ही हमारे ट्री, दैट आर स्मॉल स्केल. एंड इन दोनों इमेज में अगर हम कंपेयर करें तो आउट ऑफ स्केल बिकॉज दिस इज अ स्मॉल स्केल, these two image are interrelated because these are the small scale, because जो हमारे ट्री है ये ग्राउंड फ्लोर है, रूफिंग सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है बट स्लोपिंग रूफ है. सिंगल स्टोरी जो ट्री होते हैं वो ट्री उनसे थोड़ा सा ऊंचे होते हैं, देन दिस इज आउट ऑफ स्केल एंड दिस इमेज इज इन स्केल बिकॉज जो ट्री है वो थोड़ा सा हर्ट से ऊंचे हैं और लेवल इक्वल नहीं है. ये जो इमेज है ये भी सिमिलरली यही डिफाइन कर रही है आउट ऑफ स्केल, बिकॉज ये एक ह्यूमन बीइंग है और ये दरवाजा इतना बड़ा और उनके साथ ये ट्रीज
This image also shows a unbalanced or out of scale. Proportion is important factor with a scale, right? And so thank you. We will discuss in this